Now we take in theory next topic. In fact, last topic taken here is in theory part relation of delta G naught Q reaction quotient and K equilibrium. Relation of delta G naught Q and K equilibrium. You get questions frequently in entrance examination on this topic. To find the relation, you can take here delta G is equal to the relation of delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. Equations given here, relation of delta G and delta G naught with Q. Q is reaction constant, log natural, RT. R is gas constant, T temperature. Now we know one point here that sign of delta G will tell the reaction's nature. We have seen in thermodynamics, sign of delta G will tell the nature of reaction. देखिए, if delta G is negative, that means reaction is spontaneous, feasible, possible. If delta G is positive, that means reaction is non-spontaneous, not possible. And if delta G is 0, that means the reaction is at equilibrium. Because delta G is 0, not delta G naught. When the reaction is at equilibrium, delta G becomes 0. And you know further that at equilibrium, Q is reaction quotient, that also become equal to K equilibrium. So if you write this expression here, कि at equilibrium delta G कितना होगा 0, then Q is reaction quotient, become equal to K equilibrium. We can write as Kc or Kp. So when Q and K are equal, we can write this expression once again. Okay, this 0. If you write the reaction in log base 10 form, delta G naught plus 2.303 RT log K equilibrium. I written the reaction now in terms of log base 10. Equation can write this way, or this expressions can be written this way. Delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K equilibrium. Delta G naught of reaction become equal to minus 2.303 RT log K equilibrium. So equation is directly important for you. In calculation, just be careful. Delta G naught and R must be taken in same energy units. What is delta G naught? देखिए आपका दो टर्म्स दिखा डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज. ऑलरेडी वी डिस्कस इन टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स. I'm just writing again. Delta G is called free energy change or gives free energy change. Free energy change of the reaction. What is delta G naught? It is called as standard free energy change of the reaction. इसका मीनिंग क्या होता है स्टैंडर्ड मीनिंग? It means the condition of temperature to be taken 25 degrees Celsius or 298 Kelvin and a pressure 1 atmosphere or 1 bar. As for latest recommendation 1 bar. In such condition, delta G naught of the reaction is how much? We can write delta G can be variable, can be 0, negative or positive. Delta G is more, delta G has significance that it can tell the direction of reaction. It helps in predicting the direction of reaction, but delta G naught not. Delta G naught can help in predicting the direction of reaction only when conditions are given standard, but otherwise delta G only can be helpful to you to find the nature of reaction. इसका मीनिंग क्या होता है? Reactions are
or non-spontaneous. We have discussed in details in topic thermodynamics, but you can take in brief. The reaction is said to be spontaneous if they are capable of self-sustenance, either directly or after start. एक बार हम रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे फिर आपका रिएक्शन चलता रहेगा. Such kind of reactions are spontaneous, which can occur by their own, either directly or after some initiation. और क्या होता है? What are which reaction are non-spontaneous? They will occur as long as from outside energy is supplied. That reaction had to be non-spontaneous, like water flowing uphill. कैसे होता है? आप मोटर को चला देंगे पानी ऊपर जाएगा, मोटर बंद कर देंगे पानी आपका रुक जाएगा जाना ऊपर. So that reaction is non-spontaneous. Water नीचे आना, that is spontaneous. And one is given at equilibrium. If you take water in a beaker covered by jar, evaporation, liquid to vapor conversion, vapor to liquid conversion back, that can be at equilibrium. So remember at equilibrium delta G is 0. So in this question, in this topic, we can get question in calculation of delta G naught or K equilibrium. Temperature to be always taken Kelvin scale, taken R value 8.314. अगर आपको डेल्टा G दिया जूल्स में या आपको दिया कैलोरीज में, तो आपके लेंगे वैल्यू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल. ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि पूछा है डेल्टा G निकालने के लिए डेल्टा G नॉट, दे टेक R वैल्यू 0.0821. In that case you get an answer in different terms. बट आपको ऑप्शन में दिया होता है जूल्स, किलो जूल्स, कैलोरीज, किलो कैलोरीज. तो बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स. डेल्टा G नॉट एंड R must be taken in same energy units. Are you clear this point? So be careful. Now sometime in the question delta G naught is directly not given to us. We will find indirectly. So some relations which we have seen in topic thermodynamics will also be helpful to you. आपको क्या मैं दे दे रहा हूँ reactions. Delta G naught of reaction we can take is equal to delta H naught minus T delta S naught. It is standard enthalpy change. It is delta S is what? Standard, not for standard, entropy change. T temperature in Kelvin scale. So if in question delta G naught is not given to us, but delta H naught and delta S naught is given, you can use that. From here find delta G naught. Sometime in the reaction even delta H naught is not given to us, so we find delta H naught of reaction by summation of enthalpy of formation of products minus summation of enthalpy of formation of reactants. Standard conditions. R for reactant, P product, R for reactant. And delta S naught of reaction similarly you can find summation of entropy of formation, standard entropy formation, product minus reactant. And even delta G naught of reaction you can find summation of delta G naught formation of products minus summation of delta G naught formation of reactant. ये प्रोडक्ट का ही रिएक्टेंट का होता है. For information you must remember delta for pure elements, delta H naught formation और delta G naught formation are 0. ये आपका इंफॉर्मेशन के लिए है कि for elements delta H naught formation और delta G naught formation are 0. Sometimes the question their values are not given to you. They are not given to us because it is 0. So नहीं आपको मिलेगा क्वेश्चन में. तो अगर नहीं दिया है तो आप उसको देख लेंगे कि for pure elements in the standard state delta H naught formation or delta G naught formation are 0. Remember delta S naught formation is mostly non-zero for even elements.
तो एनीवे इन द क्वेश्चन टू फाइंड डेल्टा जी नॉट, क्वेश्चन क्या देता है, फाइंड डेल्टा जी नॉट इफ गिवन इज के इक्विलिब्रियम और फाइंड के इक्विलिब्रियम इफ डेल्टा जी नॉट इज गिवन. समटाइम इन द क्वेश्चन डेल्टा जी नॉट इज नॉट गिवन टू यू, आपको दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको निकालना पड़ता है. कैसे निकालेंगे, ये सारे इक्वेशंस आपको हेल्प करेंगे. एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये वाला है, अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पता है तो आप निकालेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे. अदरवाइज इसको एक और तरीका से निकालने का, यहाँ से निकाल सकते हैं. These all equations will help you to find delta G naught of reaction. Once for the reaction delta G naught is known to you, you can try the remaining part. Okay? तो ये हमारा चैप्टर का थ्योरी पार्ट है, खत्म होगा इसमें. आपको मैं इस पे क्वेश्चन और करा रहा हूँ साथ साथ. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है फॉर ए रिएक्शन डेल्टा जी नॉट, सॉरी आपको दिया फॉर रिएक्शन given the value of K equilibrium is 10, then find delta G naught of reaction. Now to solve this question, you try this question yourself. First to try this question yourself. हो गया इसका आंसर. Now to find the answer. Delta G naught of reaction is how much? Minus 2.303 RT log K equilibrium. It seems very easy question. It is easy question, but sometimes बच्चे गलती करते हैं, R का वैल्यूज को है. तो this question is given just to make you aware of using proper units. In this question, we are not given temperature. आपको लिखा है standard conditions. So we take in this case temperature how much? 298 Kelvin. Whenever values are given or required in the standard conditions, it is always normally given. We are given temperature generally 290 Kelvin. Otherwise, they give temperature conditions. But if it happen in any question you are not given temperature, then you take temperature 298 Kelvin. This first point because they mention the conditions are standard. वहाँ पे अगर आपको वैल्यू नहीं दिया तो आप ले सकते हैं बिना वैल्यू के. अगर दिया तो आप जो दिया है आप उसको लेके क्वेश्चन करेंगे. फिर अगला पार्ट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए -2.303 R कितना होगा 8.314. टू गेट एन आंसर इन जूल्स, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल 298 log 10. व्हाट इज log 10 वैल्यू 1. तो कितने -2.303 into 8.314 into 298 log 10 is 1. तो व्हाट गया आंसर, it is joules per mole. That is the answer in joules per mole for this question. So I hope it is clear. About units, be careful. This question was just given to make you aware of units. So in this chapter theory part is over. We will take now some question practice on this chapter chemical equilibrium. So let us take some question practice on chapter chemical equilibrium. First question given to you, write down. देखिए 2 moles of PCl5 are taken in 5 liter vessel, 5 liters vessel. Full stop given. At equilibrium 50% of PCl5 is dissociated. Then find Kc for the reaction. आपको रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 giving PCl3 plus Cl2 in the gas phase. For the reaction find Kc. Okay, so try this question yourself. Now coming on solution part. To solve this question, we can take what is moles, initial moles given to you. What is initial moles in system? 2 moles. So initially we have 0 PCl3 or Cl2. Now what is moles at equilibrium? कितना होगा इसका लिखा 50% of PCl5 is dissociated. How much? 50%. So out of 2 moles, how much is 50%? 1. 2 into 50 by 100 is 1. So out of 2 moles, how many mole dissociate? 1. They will how many mole of PCl3? 1.
और द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सबका वन हुआ। नाउ फॉर फाइंडिंग Kc व्हाट वी रिक्वायर, कंसंट्रेशन। आपने मोल्स आ गए, फ्रॉम मोल्स हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन, मोल्स बाय वॉल्यूम। आपको मोल्स दिया है 1, वॉल्यूम दिया 5 लीटर्स, 1/5 so for reaction Kc is what, write the expression of Kc first। कितना है Kc का expression, concentration of PCl3 into Cl2 divided by concentration of PCl5, कितना होगा, what is PCl3, 1/5 into 1/5 by 1/5, so how much answer remains, 1/5, 1 is cancelled out। So for the reaction Kc come how much finally, for the reaction Kc will be coming 1/5 or 0.2 moles per liter is your answer। वॉल्यूम को आप हमेशा जान रखिए, इन क्वेश्चन व्हाट द स्टूडेंट कमिट मिस्टेक, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखा 1 1 1 राइट आंसर Kc is equal to 1, 1 is not the answer। आपको क्या करना पड़ेगा, Kc निकालने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन। हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है वेसल का 5 लीटर्स, so use that volume as well and then find the answer। okay, that is your one question। okay, write next question लिखिए, write the next question लिखिए। a solid sample ammonium hydrogen sulfide NH4 solid, NH4HS solid, a solid NH4HS, the amount and amount of solid NH4HS is added in a flask already containing ammonia, in a flask already containing ammonia at a pressure of 0.5 atmosphere, at a pressure of 0.5 atmosphere, full stop। NH4HS decompose to yield ammonia and H2S gas, decompose to yield ammonia gas and H2S gas in the flask, decompose to give ammonia and H2S gas in the flask, full stop। आगे लिखिए, when the decomposition reaction reaches equilibrium, the total pressure is found to be, the total pressure of mixture is found to be 0.84 atmosphere, the total pressure is found to be 0.84 atmosphere। then find Kp for the reaction, okay। so try this question yourself, try कर लिया। now let us come on solution part। to solve this question, first we'll take in a flask, the volume will remain constant, flask already contain ammonia at a pressure of 0.5 atmosphere, flask already contain ammonia at a pressure of 0.5 atmosphere at a given temperature। now what happens when this compound decompose, when NH4HS decompose to form ammonia and H2S gas, amount of gas produced increases, H2 and ammonia and H2S gas, then what happen, pressure increases because gas के मोल्स बढ़ेंगे, आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो let us say pressure increase for both the gas to equal extent, ये तब तो था नहीं स्टार्टिंग में, तो now pressure increase by equal extent P each। now what is total pressure, it is P of ammonia plus P of H2S gas। what is total pressure,
0.8 for atmosphere. What is P of ammonia? 0.5 plus P plus H2S P. कितना होगा? 2P plus 0.5 is equal to 0.84 और P will be how much? 0.84 minus 0.5 by 2. कितना आपको जाएगा ये? 0.17 atmosphere. That in the reaction small p will be coming 0.17 atmosphere. Then Kp for the reaction is how much? P of ammonia into P of H2S gas. What is P of ammonia? New pressure 0.5 plus 0.17 into P of H2S 0.17, and that is your answer 0.67 into 0.17. On solving, you get your answer. What is the unit here? Atmosphere square. Can be taken as your answer of this question. ठीक है, आप उसको निकाल लीजिए. On solving, you get your answer accurately. Okay, write the next question. देखिए, write because solid ammonium carbamate, solid ammonium carbamate means NH2 COO NH4. This formula of ammonium carbamate, solid ammonium carbamate dissociate to give ammonia and CO2 as follows. Dissociate to give ammonia and CO2 gas as follows. आपको रिएक्शन दिया है NH2 COO NH4 solid give 2 ammonia gas plus CO2 gas. आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, रिएक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में NH2COO NH4 give 2 NH3 gas plus CO2 gas. आगे लिखिए at equilibrium ammonia is added such that partial pressure of ammonia at new equilibrium becomes equal to original total pressure. Full stop. Calculate the ratio of total pressure to the pressure and to the new original pressure. Calculate the ratio of total pressure. Now total pressure now to original total pressure. Okay, you try this question yourself. Let's solve this question. To solve this question, we can say initially it is given that system have no ammonia, no CO2. Whatever we get the gas only from the ammonium carbamate. So let us take the mole ratio 2:1. So ratio of pressure is same. If CO2 have partial pressure P, then for ammonia pressure is 2P. And then for the reaction we can write total pressure is how much? P of ammonia plus P of CO2. It is 2P plus P become 3P. That the total mixture of total pressure equal to how much? 3P. पहला point. Now then for the reaction, what is the Kp expression? P of ammonia square
that is 2p square into p for CO2, that is 4p cube. That's expression of Kp, that Kp is equal to 4p cube. Why I am calculating Kp? Because at same temperature Kp will remain constant. At same temperature Kp will remain constant. Then we can take the next point here. Now total pressure क्या on adding ammonia, pressure of ammonia increases. Therefore CO2 decrease होना चाहिए because Kp will remain constant. We have already seen from Lee-Chatter's principle. From Lee-Chatter's principle, if we add ammonia, one increase, second should decrease, or Kp should maintain constant. So let us take at new equilibrium. What is P of ammonia? It is how much? 3p. At new equilibrium, we add ammonia further such that at new equilibrium pressure or partial pressure of ammonia become equal to original total pressure. Then for CO2 gas, we can write what new partial pressure will be how much? Let's say P dash. Now Kp will remain constant. What is Kp? P of ammonia 3p का square into P dash is equal to how much? 4p cube. Is equal to 4p cube. From here you can find relation. कितना का relation है? 9p square into P dash is equal to 4p cube. From here we can find P dash expression कितना आएगा इसमें? P square 1p square will cancel out, 1p remains, 4p by 9. So P dash is how much coming? 4p by 9. So what is new? Total pressure 3p plus P dash. That is how much coming? 3p आपको दिया हुआ है. Means what is P dash? 4p by 9. That will come how much? 2731 by 9p. 31 by 9p. Now in the question they are asking to find the ratio. What is the ratio of new total pressure by total pressure initial original कितना दिया है? 31 by 9p. We have original pressure total how much? 3p. So on solving this answer will be given how much? 31 by 27. P and P cancel out. So the answer is your finally 31 by 27 is your answer. See the question taken here. First we find the total pressure by taking more ratio of the gases partial pressure 2p is to p. That gives total pressure 3p. So Kp is how much? 2p square into p, 4p cube. For CO2 gas we have partial pressure how much? P dash. Because ammonia will be 3p. Remember Kp will remain constant at same temperature. If we increase the pressure of one gas, then for second gas pressure will decrease because Kp should remain constant, and decrease means as also it can be explained using Lee-Chatter's principle. If for ammonia pressure increases, when we add ammonia there should be decrease in pressure of CO2 gas, but Kp will remain constant. So at what is new that Kp expression 3p square into P dash. What is P dash coming? 4p by 9. Okay. And then what is new total pressure? New pressure of ammonia plus P dash pressure of CO2 gas. That is how much coming? 31 by 9 p. And then ratio on the question they require. Ratio of new total pressure to original total pressure is your answer 31 by 27. Okay. Hello students.
Now we will continue practicing problems of chemical equilibrium. Write on next question. देखिए 1 mole of N2O4 gas. 1 mole of N2O4 gas is taken in a closed container. 1 mole of N2O4 gas is taken in a closed container at 300 Kelvin temperature and 1 atm pressure. Full stop. It is heated to 600 Kelvin temperature when 20% by mass of N2O4 is dissociated to give NO2 gas. Full stop. Find the resultant pressure. Okay, you try this question yourself. Now in solution part, to solve this question, what we need to say here? To solve this question, we can say here, what are variables? In this case, the compound taken is N2O4 gas will dissociate क्या देता है? NO2 gas. आपको पता है चीज़ है कि N2O4 गैस क्या देगा? हीट करने पर डिकम्पोज होगा तो आपको देगा NO2 गैस. अब यहाँ पर क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट है, तो उस रिएक्टेंट के लिए जितना आपका मास परसेंटेज है उसका सेम होएगा वॉल्यूम परसेंटेज, मोल्स परसेंटेज. फॉर द सेम सब्सटेंस द मास परसेंटेज सेम एज द मोल्स परसेंटेज. ओके, तो इसमें आपको दिया है इनिशियल मोल्स. आपका ये केमिकल रिएक्शन, तो आपको कितना दिया है? इनिशियल मोल्स 1 मोल. ये 0 है. व्हाट इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम? This normally compound decompose in a closed container will be coming to equilibrium point. At the point of equilibrium, how many mole dissociate? 20%. तो कितना आएगा 1 का 20%? 0.2 मोल. तो 1 minus 0.2. 1 मोल की 2 मोल्स, तो 0.2 मोल की 2 into 0.2 कितना हो जाएगा? 0.4 मोल्स. ये कितना आपका रह गया? 0.8. तो इनिशियल मोल हमारा कितना है? 1. What is moles after dissociation of 20% of N2O4 कितना होगा? This plus this 1.2 moles. अब इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए आपको देखना है इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं. इसमें हमारे 2 वेरिएबल्स हैं. एक तो दिया है आपका टेम्परेचर. इनिशियली वी हैव टेम्परेचर 300 केल्विन. ऑन हीटिंग वी हैव टेम्परेचर 600 केल्विन. पहला वेरिएबल. सेकंड क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स. आपकी गैस के मोल्स भी चेंज हो रहे हैं. यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिया है 1 मोल. व्हेन दिस डिकम्पोज तो आपको दिया है 1.2 मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स आपका चेंज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, और आपका चेंज हो रहा है टेम्परेचर. नॉर्मली अभी टिल नाउ वी हैव सीन कि टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, बट यहाँ पर क्या टी आपका वेरिएबल है. हमें इसमें केपी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है इसमें? प्रेशर. तो लेट अस सी प्रेशर के लिए क्या क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर कितना होता है? nRT by V. From here we can say pressure is proportional to number of moles and temperature if volume is constant. लिखा ना, closed container, so volume is constant. We can write from here P upon NT become constant from this expression, or we can write from here P1 by N1 T1 is equal to P2 by N2 T2. ये हमारा सारा दिया है इनिशियल कंडीशंस पर. ये हमारी है इनिशियल कंडीशंस, और ये दिया कंडीशंस ऑन डिसोसिएशन. तो हमें क्या निकालना है? P2. आपका P1 कितना दिया है? स्टार्टिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. इनिशियल मोल्स 1. इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन. कितना दिया प्रेशर फाइनल? आपको निकालना है P2. व्हाट इज फाइनल मोल्स? 1.2. फाइनल टेम्परेचर हीट करने के बाद 600 केल्विन टेम्परेचर. तो इसको सॉल्व करने में क्या करनेगा? P2 का वैल्यू. तो सॉल्विंग P2 will come how much? 2.4 एटमॉस्फेयर.
अब चेक कर लीजिए, सॉल्विंग P2 will come 2.4 atmosphere. That is your answer, 2.4 atmosphere. तो अभी जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा चेक कर लीजिए कि हमारे क्या क्या वेरिएबल्स हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपका टी को छोड़ दोगे कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अलोन, तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा इसमें। आप इस तो मोल्स आपको हो जाएगा इतना, तो प्रेशर आपको हो जाएगा सेम 1.2 एटमॉस्फेयर। नॉट करेक्ट आंसर। इन द क्वेश्चन वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज प्रेशर टेम्परेचर एंड सेकंड इज नंबर ऑफ मोल्स। Take care of both things. So it is one more expression you can get or you can use in questions when we have two variables, temperature and number of moles. To find the relation of pressure, you can use this expression directly. Okay? तो हमारा ये हुआ next question. चलिए let us write next question. Okay, write next question. लिखिए. Write on. In a mixture of N2 and H2 gases. In a mixture of N2 and H2 gases in the ratio of 1:3, in the ratio of 1:3 at 64 atmospheric pressure, at 64 atm pressure and 300 degree Celsius temperature, and 300 degree Celsius temperature, the percentage of ammonia is 33.3% by volume. Percentage of ammonia is 33.33% by volume. Full stop. Calculate the equilibrium constant Kp. Calculate the Kp for the reaction. आपको रिएक्शन है N2 plus 3H2 giving 2 NH3, all in gas phase, all are gases. Okay, read this question carefully, try yourself first, then see. Okay, आपने ट्राई कर लिया क्वेश्चन उसको है। सो इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट अस सी। एक तो आपको दिया है अमोनिया, दिया है वॉल्यूम परसेंटेज 33.3%। इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, फॉर गैसेस वॉल्यूम परसेंटेज इज सेम एज द मोल परसेंटेज। फॉर गैसेस द वॉल्यूम परसेंटेज विल बी सेम एज द मोल परसेंटेज। पहला पॉइंट आपको यूज करेगा, आप हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन में। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब इनिशियल मोल्स क्या लिया है, मोल्स नहीं दिया, आपको मोल रेशियो दिया है, लेकिन देखिए सेम मोल रेशियो। तो फॉर द रिएक्शन, फिर एट द रिएक्शन वंस अगेन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2 NH3 गैस। इनिशियल आपको दिया हुआ है मोल्स 130। What is moles at equilibrium? It is initial moles. What is moles at equilibrium? 1 minus x, 3 minus 3x and 2x moles. Okay. So what is total moles at equilibrium? What is initial moles? 4 moles. What is moles at equilibrium? What is total moles at equilibrium? सारा ऐड कर लीजिए। 4 minus 4x plus 2x means 4 minus 2x. The total number of moles are becoming 4 minus 2x of the mixture at equilibrium. Now for ammonia you are given the volume percentage. For the ammonia or gases, volume percentage is same as the mole percentage. Volume percentage same as the mole percentage. तो कितना दिया है अमोनिया का मोल्स 2x. Total moles 4 minus 2x is equal to how much? 33.33 means you can directly divide it 1/3. 1/3. From here you can find the value of x. Can you find the value of x from here? देखिए कितना पाएगा सॉल्व करने पर, ये होगा 3x is equal to 4 minus 2x. Means अब कल इसको सॉल्व करने कितना आएगा 6x
is equal to 4 minus 2x, and then it can be taken 8x is equal to 4, और x कितना आ जाएगा 0.5, x is coming 0.5. One information. Now for the calculation of Kp for the reaction, we require the moles of separate gases and total number of moles and total pressure. Because knowing this all information, for each gas we can find partial pressure, and then once we know for each gas partial pressure, we can find the answers. What is number of moles given of ammonia? 2x. 2x means 0.5 into 2, 1. यहाँ पे अब करेगा 1.5, यहाँ कितना पड़ेगा 0.5. What is in total moles? 3. Total number of moles become 3. And separate gas have number of moles 0.5 moles of nitrogen, 1.5 moles of hydrogen, and ammonia is 1 mole. Once we know the moles of each component, we can find for the gas Kp, expression of Kp value. For Kp calculation, what we require? Partial pressure of each component, P of ammonia square by P of N2 by P of hydrogen power 3. What is P of ammonia gas? Moles of ammonia 1. Total moles 3 into total pressure given of mixture is 64 atmosphere. When total pressure is 64 atmosphere square by, for nitrogen gas number of moles 0.5, total moles 3 into 64, and for hydrogen number of moles कितना है 1.5, total moles 3 into 64 cube. When it is solved, you get your answer. I hope it is clear. यहाँ पर आपको दिया है वॉल्यूम परसेंटेज. इसका क्या है वो सिग्निफिकेंस, ये आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, x निकालने के लिए. अगर हमें सबके मोल्स पता होंगे और टोटल मोल्स पता है तो क्या निकाल पाएंगे? मोल फ्रैक्शन फॉर ईच गैस. एंड इफ वी नो टोटल प्रेशर आल्सो, देन फॉर ईच कंपोनेंट वी नो द पार्शियल प्रेशर. नोइंग पार्शियल प्रेशर, वी कैन फाइंड फॉर द एक्सप्रेशन Kp value. We can find for the reaction value of Kp. I hope it is clear. So on solve you can check out your answer. Answers coming 1.3 into 10 to the power minus 3 atm power minus 2. आपका यूनिट है Kp का यूनिट ऑफ प्रेशर पावर माइनस यूनिट ऑफ प्रेशर पावर डेल्टा Ng. तो कितना है डेल्टा Ng? 2 minus 4 minus 2. प्रेशर टेकन एटमॉस्फेयर, तो यूनिट ऑफ Kp का एटमॉस्फेयर पावर minus 2. Already we discussed कि Kp, Kc are not fixed units, not the fixed units. Units of Kp, Kc depend on the chemical reaction. So I hope it is clear this question. चलिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. रैडम 20 grams of calcium carbonate. रैडम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 gram of calcium carbonate solid were placed in a closed vessel. Were placed in a closed vessel. In a closed vessel and heated and maintained at 727 degrees Celsius. Heated and maintained at 727 degrees Celsius under equilibrium. आपको रिएक्शन दिया है CaCO3 solid from calcium oxide solid plus CO2 gas. Under equilibrium CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas. Full stop. It is found that 75% of calcium carbonate, 75% of calcium carbonate is decomposed. Full stop. Find the value of Kp. Find the value of Kp. Given the volume of container is 15 liter. Given for the vessel, the volume is 15 liters. आपको निकालना क्या है? Kp का वैल्यू. ओके,
तो it is given that 75% of CaCO3 decompose, volume of vessel is 15 liters, निकालना क्या रिएक्शन के लिए Kp. Okay, so you try this question yourself. Now to solve this question, let's come on solution part. इसमें क्या है, आप मोल्स निकाल लीजिए. How to find the moles? Weight upon molar weight. 20 by molar weight is of how much of CaCO3? 100. 0.2 moles. Now what happened at equilibrium? 0.2 x mole dissociates. So they can give x moles and x moles initial or at equilibrium. Okay, तो आपको दिया कितना है, how much decompose? 75%. तो what is 75% of 2? What is x taken here? 75% of initial moles 2 कितना आपका देगा 0.15 moles. So x कितना आपका देगा 0.15. So how much remains? 0.05. आपका आ जाएगा ये 0.15. ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन देगा in solving this question, that how many moles we are getting of CaCO3 remaining 0.05 moles. कैसे? आपको दिया है 20 ग्राम, तो वेट अपॉन मोलर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. इसका 0 है स्टार्टिंग में दोनों प्रोडक्ट का. ये कितना मोल्स लिखा है ना, हाउ मच अमाउंट डिकम्पोज 75%, तो कितना आएगा 2 का 75%? 0.15 मोल्स. कितना मोल बचेगा? 0.05. कितना पाएगा x? 0.15. समझ आ नहीं आ रहा है? दोनों कहेंगे 0.15 मोल्स ईच. पहला पॉइंट. अब आपको निकालना है Kp. तो फॉर फाइंड द Kp ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ Kp? इट इज P of CO2 अलोन. ये सॉलिड है, दोनों CaO सॉलिड है, CO3 भी सॉलिड है. फॉर Kp एक्सप्रेशन वी डोंट इन्वॉल्व सॉलिड्स, हम क्या लेते हैं? खाली गैसेस. इसमें गैस कौन सा है? खाली CO2 गैस. सो फॉर दिस रिएक्शन Kp is same as P of CO2 गैस. कितना है Kp? same as P of CO2 गैस. तो कितना है P of CO2 गैस? अब देख लीजिए, फ्रॉम गैस इक्वेशन Pv is equal to nRT. व्हाट इज प्रेशर? nRT by V. n कितना दिया आपको? मोल्स ऑफ CO2 गैस 0.15, R 0.0821. टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल कितना है आपका? टेम्परेचर है 727 plus 273 become 1000 Kelvin. टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल. वॉल्यूम 15 लीटर्स. आपको दिया क्वेश्चन में वॉल्यूम 15 लीटर्स. वी टेक टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन स्केल. तो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट कितना पाएगा? यू कैन चेक इट आउट आंसर. तो इन दिस रिएक्शन Kp is same as PCO2. व्हाट इज P of CO2 on solving? 0.821 atmosphere. So it is same as Kp also. So for the reaction Kp is same as P of CO2 is equal to 0.821 atmosphere as your answer. अब चेक करिए, आपका जो 100 मीन्स कितना हुआ? 10 into 0.021 मीन्स 0.821 एटमॉस्फेयर इसका यूनिट रहेगा. तो Kp कितना हुआ रिएक्शन में? PCO2. यहाँ पर हमने लिखा इसको जरूर है. आप बोले सर सॉलिड है, लिखा क्यों? देखिए आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको निकालना है मोल्स कितने होंगे CO2 गैस के. हम लिखते हैं रिएक्शन होगा तो आपका इतना डिकम्पोज होने के बाद इतना मोल्स बचा रहेगा 0.05. इसका मोल्स बनेगा 0.15, इसका मोल्स 0.15. बट फॉर Kp कैलकुलेशन क्या लेते हैं? ओनली गैसेस. बट फॉर Kp कैलकुलेशन टेक ओनली गैसेस. तो उसमें गैस क्या है? सिंगल गैस है CO2 गैस. आप खाली CO2 गैस को लेंगे फॉर Kp कैलकुलेशन. आई होप इट इज क्लियर. चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग. एट some temperature and a pressure of 4 atmosphere, at some temperature and a pressure of 4 atmosphere, PCl5 is 10% dissociated. PCl5 is 10% dissociated. Full stop. Calculate the pressure
calculate the pressure at which PCl5 is 20% dissociated. Calculate the pressure at which PCl5 is 20% dissociated at same temperature. Okay, so try this question yourself first. आपने ट्राई कर लिया. Now to solve this question, आप देखिए एक क्या लिखा है इसमें, सेम टेम्परेचर, सेकेंड पार्ट के लिए भी अगर हम लेंगे सेम टेम्परेचर तो क्या होता है, Kp will remain constant. यहाँ पर क्या है, we are changing the degree of dissociation. When alpha will change, what will happen? When alpha will change, the total pressure will change at equilibrium, but Kp will be maintained constant. तो Kp will be maintained constant. आप चेक कर लिए इक्वेशन देखकर, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट द रिएक्शन फर्स्ट. व्हाट इज रिएक्शन? PCl5 डिकम्पोज टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2. ये कॉमन रिएक्शन है. अगर नहीं भी दिया क्वेश्चन, आप इसी को लिखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर इक्वेशन को. अब यहाँ पर क्या होगा, लेट अस टेक इनिशियल मोल्स. इन द क्वेश्चन नथिंग गिवन, यू कैन टेक वन मोल. I'm again repeating, in the question if nothing given, you take one mole, बिंदास होके एक मोल लिया आपने यहाँ पर. अब क्या होगा, what is moles at equilibrium कितना हुआ, 1 minus alpha, total moles कितना आएगा इसमें, 1 plus alpha at equilibrium. So what is Kp expression? P of PCl5 into P of Cl2 by P of PCl3 रहेगा प्रोडक्ट में, PCl5 in denominator. तो क्या आएगा आपका एक्सप्रेशन? ऑलरेडी आई शोन डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. दैट एक्सप्रेशन ऑफ Kp विल बी कमिंग alpha square into Pt, P is total pressure, by 1 minus alpha square. Now we are taking two conditions. One, alpha is changing. So if I write in one case alpha 1 as degree of dissociation, P1 is pressure in first case. When alpha will change, pressure will adjust to maintain the Kp constant. So in second case, alpha 2 square into P2. Alpha 2 can be taken 20% is 0.2, 1 minus alpha 2 square. यहाँ पर मैंने क्या किया है, Kp का क्या वैल्यू कांस्टेंट रखा है. Kp will remain same at same temperature. अगर हम अल्फा को चेंज करेंगे, तो क्या होगा, आपका प्रेशर आपका यहाँ पे चेंज होगा, बट Kp क्या रहेगा इसमें, फिक्स रहेगा. Kp क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा. अब देख लीजिए आपको दिया है अल्फा 1 का वैल्यू 10% मीनिंग 0.1 और आपको दिया P1 प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 4 एटमॉस्फेयर. अल्फा 2 को दिया है 20% मींस 0.2. तो व्हाट इज प्रेशर सेकंड एट इक्विलिब्रियम, P2 कितना है आपको निकालना है. दो तरीके, या तो Kp निकालो पूरा फिर इक्वेट करो यहाँ पर, या इक्वेट डायरेक्टली द टू एक्सप्रेशंस, बिकॉज एनीवे Kp तो कांस्टेंट रहेगा. दोनों केस में Kp का वैल्यू सेम रहेगा. तो आप डायरेक्टली दोनों को इक्वेट कर दीजिए. दोनों का अल्फा पता है आपको और P1 पता है, आपको निकालना क्या है, P2 का वैल्यू. आराम से अपन निकल जाएगा P2 का वैल्यू. Can you find the answer of P2? On solving your P2 should come. इससे कम आएगा 4 से. That will come in solving 0.97 atmosphere. Okay? So your answer कितना आएगा इसमें? बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए. You will get an answer. Okay, write next question. देखिए मैडम, at 627 degree Celsius, at 627 degree Celsius and 1 atm pressure, sulfur trioxide is SO3 is partially dissociated
into sulfur dioxide and O2 gas, into sulfur dioxide and O2 gas, full stop. The density of equilibrium mixture is 0.925 gram per liter. Mixture is 0.925 gram per liter. Then calculate Kp for the reaction. Then find Kp for the reaction. SO3 give SO2 plus half O2 gas. आपको रिएक्शन दिया इसमें गैस फेज में, आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया है गैस फेज में. ओके, so try this question first. हो गया. Now let us come to solution part. Now to solve this question में क्या चाहिए इसमें information? Write the equation first. SO3 decompose to form SO2 plus half O2 gas. Write the reaction first to start here. अब यहाँ पर कितना मोल दिया स्टार्टिंग में? इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कितने मोल्स दिए हैं आपको नहीं पता है, नहीं दिया क्वेश्चन में. अगर आपको स्टार्टिंग मोल्स नहीं दिए हैं तो हम क्या करेंगे? यू टेक 1 मोल इनिशियली. तो व्हाट इज इनिशियल मोल्स? आप 1 ले लिया. देन व्हाट इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम? 1 minus alpha by 2. 1 mole भी 1 mole and half mole तो alpha and alpha by 2 moles. What is total moles at equilibrium? This plus this कितना आएगा? 1 plus alpha by 2. The total moles is how much at equilibrium? 1 plus alpha by 2. इतना आपका आ गया. अब आप देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, तो from density we can find the average molar mass and then alpha you can find out. देखिए अगला पार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. What is molar mass mixture और m average? DRT by P. Sorry, yes P. आपको D दिया है डेंसिटी 0.925. Sorry, right side. 0.925. R 0.0821. Temperature in Kelvin scale 627 means plus 273 कितना हो जाएगा इसमें? 900. Pressure 1 atmosphere. You can solve from here the molar mass of mixture. You find from here the molar mass of mixture. ये आप कैलकुलेशन करें खुद ही. After calculation of molar mass of mixture, एक हमारा एक्सप्रेशन था क्या? Moles at equilibrium by initial moles is equal to initial molar mass. What is initial molar mass? By molar weight at equilibrium or mixture. Initial molar weight is known to us. For sulfur trioxide कितना होगा? 80. What is molar weight of the mixture at equilibrium? It is same as M mixture. From here you will find the value of alpha. From here you find the value of alpha. Now alpha is known to you. Molar mass mixture की knowledge होने के बाद, then for the reaction you can come on the Kp calculation. For calculation of Kp, what is required to us? P of SO2 into P of O2 power half divided by P of SO3. What is P of SO2? Moles of SO2 by total moles into PT. PT आपको दिया 1 atmosphere. For O2 moles alpha by 2 by total moles 1 plus alpha by 2 into PT 1 power 1 by 2. Coefficient आपका रहेगा power divided by moles of SO3 total moles 1 plus alpha by 2 into PT. Now in the given case PT आपको दिया है, PT आपको दिया ऑलरेडी कितना है? 1 atmosphere. PT दिया आपको ऑलरेडी 1 atmosphere. तो PT पता है आपको, अल्फा आप निकालेंगे यहां से
तो once alpha is known to you, Pt is known to you, then for the reaction Kp you can determine. फिर आप क्या Kp का वैल्यू आप निकाल सकते हैं उसके बाद. आई होप आपको समझ में आएगा. ये पहले निकालेंगे मोलर मास मिक्सचर इस डेटा से, फिर हम निकाल पाएंगे अल्फा का वैल्यू. था ना रिलेशन मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू इनिशियल मोलर वेट बाय मोलर वेट एट इक्विलिब्रियम. हाउ टू फाइंड इनिशियल मोलर वेट? किसका होता है इनिशियल मोलर वेट? खाली रिएक्टेंट के लिए. कौन सा रिएक्टेंट है? SO3. कितना होगा उसका मोलर वेट? 80. और अब यहां पे निकाल पाएंगे एवरेज मोलर मास मिक्सचर के लिए. तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा का वैल्यू. वंस अल्फा इज नोन टू यू, फिर निकालना है Kp. फॉर Kp सॉरी इट्स SO3. फॉर कैलकुलेशन ऑफ Kp हमें क्या रिक्वायर्ड होगा इसमें? फॉर ईच कंपोनेंट वी रिक्वायर पार्शियल प्रेशर. ठीक है ना? तो कितना आएगा? पार्शियल प्रेशर के लिए आपको अल्फा चाहिए, टोटल मोल्स चाहिए, और फिर ये दिया है मोल्स ऑफ SO3 1 minus alpha total moles, total pressure दिया 1 atmosphere. Putting here all the values you will get your answer. The answer on solving should come 0.198. The answer given for this question is 0.198. Okay. Can you tell the units? ATM power half. Your answer. SKP.